sir. And content and undishonored, and grant us in the end the gift of sleep. Amen. The praise. Like, it didn't feel like we left our country because it's literally the same thing. So that's how I felt. No culture shock, no nothing. India and Kenya culture. The difference between Indian and Kenyan culture is, to be honest, is really no difference that I can think of because it's rather the same thing. Uh, Maybe a few borrowed ideas here and there, but it's the same thing. The togetherness you guys have while celebrating your traditions, like for example, your festivals like Diwali, it's the same thing, and that's why we felt so at home while over here because of the similarities. Yeah. Which food do you like it in India? Oh, I, I would say kulfi is good. Kulfi. Cook. What else? Any more? Let me think. There's also what you call it? Can't remember half of the names. So if I can describe it. We ate it right now. we just I ate can't it remember what right it's now. called. There's jalebi, obviously Yeah. a few Indian snacks, and the paneer. I like paneer a lot with roti, a bit of curry. Yeah. And what's the main festival you have in Kenya as we have Diwali in India? Oh, there are a lot of festivals that we can't even celebrate. I mean, we can't say what's a main because of Kenya has people from pretty much all over the world living and saying the Kenyan. We also celebrate Diwali as well in Kenya. And there's also Christmas, different things Indeed. where we can't select a main. But I'd say Diwali is as big there as it is here. Okay. Yeah. What is the difference between Indian schools and Kenyan schools? I would say Indian schools and Kenyan schools. Most of the residential schools here are big, and in Kenya, where you'd say, "Oh, it's a good school," the size difference is massive. We had there's a school. Where was it? But it was 720 acres here, and daily itself it's 118, and you can barely get around without getting tired. But in Kenya, it's like everything in the school is close together. So Yeah. yeah. And the public schools here are a bit more advanced in a sense. And the teaching and the education system is very similar. Most teachers, in a sense, have a passion to teach, and you can see that from the get go, like we saw from Daily. And honestly, the relationship between the teachers and the students is what, in a sense, we don't have as much in Kenya, where students don't really want to try too much to have that relationship, but it's very common here, which is really nice to see. You have stayed in Indian homes. So what's the difference you find in Kenyan homes and Indian homes? I would say some furniture.
like with your beliefs, you have your statues of your gods and everything. And in some Kenyan homes, there are some religious beliefs where you'd see crosses, but it's more prominent here where you'd see your your statues, your offerings. Yeah, I think that's it. अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करना है हाँ या जी, किसी बिल्कुल। ये AFS और RS ब्राउन स्क्वायर जो संस्थाएं हैं, इनके तहत एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं। तो जब ये आते हैं यहाँ, तो यहाँ के कल्चर से, यहाँ के जो रहन सहन है, इन सब चीज़ों से ये काफ़ी फेमिलियर होते हैं। घरों में जाते हैं, होस्ट जो इनके फैमिली होती हैं, उनके घर में जाके, तो इनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है वहाँ। ये सीखते बहुत हैं और अपनी अच्छी यादों के साथ जाते हैं यहाँ से। और जैसे अभी फेस्टिवल का समय था, दीपावली था, तो इन्होंने देखा कि दीपावली किस तरह से मनाया जाता है, कितना उत्साह लोगों में होता है और किस अपनेपन से लोग इनको स्वीकारते हैं। तो ये सीखने को इनको मिलता है। AFS में और RS में, ब्राउन स्क्वायर में, ये सारी चीज़ें होती हैं। सर, क्या आपने, जैसे ये कीनिया से आए हैं, क्या अपने लोग भी उधर जाते हैं? हाँ, बिल्कुल जाते हैं। और कई देशों के साथ हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं। तो बच्चे कभी 15 दिन के लिए, कभी महीने भर के लिए, कभी 2 महीने के लिए जाते हैं। वहाँ वो उनकी होस्ट फैमिली के साथ रुकते हैं, वो वहाँ के कल्चर को समझते हैं, जानते हैं किस तरह का माहौल है, क्या है। और ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, जब हम जो छोटी-छोटी चीज़ों पे आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे उसमें हम इंटरनेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम एक दूसरे को जानते समझते हैं, तो एक भाईचारा आपस में बनता है, एक अपनापन आता है। फिर हम देश दुनिया की सीमाओं से अलग हो जाते हैं। आपका एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और मैं तो हमेशा से एक्सचेंज स्टूडेंट्स जब भी आए हैं, और इस चीज़ को मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये टाइमिंग्स को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, जो बोल दिया जिस तरह से करना है, और बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं यहाँ के माहौल में। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है इनके साथ भी और दूसरे बच्चों के साथ भी रहा है। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिसकी वजह से कहीं कोई समस्या आई हो। सर, इंग्लैंड से टीचर और स्टूडेंट वगैरह आए थे अभी बीच में, तो वो कह रहे थे कि जो इंग्लैंड में है ना, 90% सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, हाँ तो जी। 10% है। तो क्या केनिया या किसी और देशों में भी ऐसा होता है? अब ये तो कीनिया का तो आई थिंक ये लोग बता पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जगह सरकारी स्कूल अच्छे हैं, अच्छा। तो वहाँ है। और हमारे यहाँ एक चलन प्राइवेट स्कूल का रहा है, तो इस तरह से That students learn how to immerse in diverse culture and inspire, right? And today I just got to know through one student, that is Eliom, and he was talking about, ma'am, I didn't feel any cultural shock when I landed in India. It was wonderful feeling when he said all these words. I mean, DPS Rajpura is doing great job by bringing students from other countries at this common platform where our Indian students also and other children also, they are getting exchange their culture and they're getting to know about their culture, and that is the first step towards learning. I think this is the best way to learn cultures, and it's a huge learning as a first step towards world peace. And I hope in future also we'll keep immersing in all such programs. Thank you so much. Thank you.